Um, Yeah. Uttam, hi, I am available. Yes, I'm so sorry. yes, yes, I'm Verna. Perfect, available perfect. from Praveen's line. I'm I just got it. trying to But wonderful. separately. Team ICCL has joined this perfectly all right. Verna, we could stay on that one. So, purpose of this webinar again is number one, just figure out the common queries of claim members and common mistakes made by claim members of ICCL. Quick recap. See, the point is, by now we have all figured out allocation more or less. We have figured out the RTRMS. We have figured out the class systems where we get the reports. We have figured out the extranet where we are uploading, downloading response files, transaction files, everything. We also having the rejections, if there's insufficient capital, loading the files again. All that is fine, but there's certain things that will still hit us going ahead. So I thought we'll focus on that too today. So remember the SEBI circular of 2021. It has two aspects: segregation and allocation. The segregation was more or less implemented by the market by November and allocation by August. And these two are connected. And unfortunately, from what we get a feedback, that back office softwares are still come to terms for this connection of allocation segregation. So the issue is the SEBI circular of 21 tries to solve two problems. One, it wants to ensure that one client fund is not used for others, which is done by paragraph 11. And then trying to ensure that all trades are backed by sufficient margin, which is visible to CC, which is para 16. Penalties have been announced for para 16, but para 11 would obviously be an inspection issue, and let's see how things move forward. Probably I'll ask ICCL at the end to kind of throw some light of how they are looking at that issue. Now, if we look at para 16, it relates to margin collection, which says that allocated collateral plus value of security repledge should be more than minimum margin. Otherwise, penalty structure comes in place. We look at para 11, which is two parts: maximum allocation and minimum allocation. I'm just reproduce the SEBI circular. The maximum amount that we can allocate. See, securities are auto allocated, so that's which are repledged as auto allocated. Everything else is comes here. Is what we have received from the clients and we have reported under segregation, which is para 4 also. And minimum allocation, again, what we have reported in the segregation has having been passed on by this CM to the CC. So if I put this in terms of, this is the para 11 connection between allocation and segregation. If I put it in terms of segregation columns, sorry. What the maximum allocation, say in the case of a self-claim member of ICCL would be, what is shown in segregation as the financial ledger balance, which usually includes EPI and uncleared checks, plus column M, that's column J, plus column M, which is the BG that we have taken from the clients, not given ahead of course. This is the internal BG, or the FDs we have taken from the clients, Liam Martin favor, or the securities commodities of OPQR. To the extent limits have not been given, or not replaced, or extra prudential limits, or extra VAR. That is what could be a maximum allocation. Add others in column S, plus EP and column T if it is not a part of J. Most people put it a part of J, I think they're supposed to. And pool account due to the extent of sales side margin obligation as is done in the FAQ. Now, minimum allocation is the sum of 80 AUAV, which we show in segregation as cash placed with CC plus BG placed with CC plus FDI placed with CC. This is actually what is passed on to the CC, and this has to be a minimum allocation. We get a feeling that this part of is still not very clear to members, and which would create some issues going ahead. So, some examples to get this minimum maximum out of the way. Suppose in the segregation file on the fund side, we have column J 100 rupees, out of which 50 is retained and 50 is placed with CC. In this case, for this client, your maximum allocation can be 100 and minimum has to be 50. Another example, again, there's a financial ledger of 200, which is 50 retained, 50 EPI, 50 cash with CC, and 50 BG with CC. 50 is cash with CC and 50 is BG with CC. In this case, maximum allocation we are allowed to do is 200, and minimum that we have to do is 100. One more example, I get securities in the picture. Suppose there's 100 rupees in funds, and 100 is shown as retained with retained with us. Perfectly. In segregation file, there's 50 approved securities received, but say we have not replaced it. So that's 0,
In that case, the maximum allocation would be 100 of J plus 50 of P minus AX, which is 0 in this case. And minimum is 0. You don't need to allocate anything if the client doesn't have a position. Of course, if he has a margin, you better allocate it. Otherwise, we'll end up with penalty under minus 60. Now, a list of common issues that we have seen members doing, which is now more or less resolved, but we forget to remove the old allocation. Once allocated, it stays forever. To remove the old allocation, we probably need to upload a nil record. A consolidated report of the entire allocation is available in class. So that should not be a problem. Class EG, that is. Second mistake, purchase against EPI shares. We have to allocate in advance. So if in the previous example where the EPI value is 50, we were supposed to allocate. It's not automatically allocated. So EPI sales side, of course, the margin becomes 0 at the end of day. Now the way T plus 4 EPI done after allocation cutoff or NCL had issued a circular. Similarly, ICCL has also issued a circular on similar lines, which says that if you have done EPI at the CC level, at the depository level, but at the exchange level, we have not received the credit. In that case, we can upload it later as a भैया हमने EPI कर दिया छोड़ दिया. Now, finally, is allocating more money to Pro. That is not us. It's very big issue. That typically, what Pro is the value of G plus the unfunded part of the bank entity, of course. These two things would probably give you a approximation of how much our own money is lying in the system. G plus unfunded part of BG. Yeah, typically 50% doesn't matter, but it could be slightly different. This is something very critical that we need to take care. A certain ideas that we receive from other members is please keep an eye on your percentage utilization RRM. The utilization is Pro actual margin of Pro plus any client usage above 90, which gets taken from Pro. Please keep eye on both the absolute fee and the percentage fee. Now another trick, there's another good market practices, especially for the EOD in the next 6 months now, almost 5 left, is if I suppose we are sitting on Monday evening we load whatever we need to load, we allocate, and that tallies with a segregation file. Tuesday morning, there'll be effects of the cash market bills, the derivative bills, all the bills. It's a good idea, even though they're going to, the checking is that Tuesday end of the day, it would be good idea to do a reallocation on Tuesday morning, so that any clients whose credit has disappeared, that we can deallocate from the client that's available for other client positions. This is just a working capital management trick if somebody wants to do it. And just beware of the 10% buffer. Any usage by the client beyond 10% will be 90% will be taken from Pro. There is no penalty from 90 to 100, but Pro balance will get used up. Another thing is RTRMS report, the beautiful reports given by ICCL really helps an FNO. But cash market, the report, the figure is the normal VAR plus ELM. It is not 20%. So the actual requirement could be less than what is showed or more than what is shown. So the required margin, the cash segment is not sufficient enough. That is a calculation that we have to do. Now, we have some sessions we give to all the clearing corporations. We'll give it to you. I believe it's in process, but that's what the members have requested. At least for the first few days when the new systems came, we are all struggling. If the penalties could be waived, say for the first week or two, that would be really helpful, because we have collected margins of clients. It just took us some time to figure out the systems. We cannot claim at ICCL that the response was slow. ICCL response was always perfect. We're getting response files in 1 minute, 2 minutes. We got extension, but if you could help, because there were certain members whose understanding was poor and took some time to figure out exactly what is required. Currently, we have only file-based allocation, which is perfectly all right. We're used to it. But when intra comes, intra allocation, we may require some scheme-based allocation. It makes life simpler.
A 20% column in the RTRMS cash segment. It is not your job, but if you could give it, it makes the reports much more easier for us to look at, especially for the exception cases. Suggestion to members: we cannot wait for CC files for uploading. Okay. What will we do from first step? We have to develop our own internal systems and processes to figure out. Probably the way going ahead is your front end has to be connected to the allocation. There has to be some kind of logic. If you give limit to a client in front end, please ensure there's allocation. So limit dega, allocation limit dega. Something on that sort has to be figured out. Otherwise, it's not going to work. So this is just a brief outline of what we said. I would love to move to Q&A part. As usual, you can just raise your electronic hand, ask your questions, and then we could take it. Before that, would ICCL team like to add, subtract a few points, see if we have missed something or any common issues they are facing, the members are asking, and any common answers before they come? Nothing as yet from my side. Perfect. Okay, if anybody has any questions, they could just raise their electronic hands. Uttam sir, Vijeta here. Yeah, Vijeta, yes. I would just like to add towards your end slide, you said that currently file upload mechanism is there. Along with that, API is also there, which most of the members are using it, and they are getting calls at quicker intervals. And with regards to screen-based, we are working on that. So that should be rolled out shortly. We will update market on the same. Thank you. Thank you so much, Vijeta. Yeah. That clarifies. Thank you so much. All right. Members, if you have any questions, you could raise your electronic hand. We could take it. But I don't think there will be many questions left in ICCL because I must, public platform, I must congratulate Team ICCL for doing a fabulous job in allocation. Of course, there's always some teething issues in the new software, but most ICCL members found it very easy and intuitive to work. The RTRMS reports were really fabulous, real on time. We do early paying and it gets updated in 15 minutes, 20 minutes, whatever is the turnaround time. So all that is very convenient. We can all can't say we have too many complaints, but yeah, we have some questions. Speak. Yes, sir. Rupesh ji, your question, please. Rupesh ji, yes. हाँ जी. अच्छा, RTRMS फाइल के अंदर जो कोलेटरल वैल्यूएशन आता है, जो CC से हमने रिप्लेस किया है, CC को हमने रिप्लेस किया है, वो वैल्यूएशन जो आता है वो T-1 के रेट पे आता है, और एक्चुअल में जब शॉर्टेज फाइल आती है वहां पे कोलेटरल वैल्यूएशन T रेट पे आता है. तो अगर RTRMS के अंदर T डे का वैल्यूएशन अपडेट हो जाए आफ्टर मार्केट आवर, यानी मार्केट खत्म होने के बाद, तो हमारे लिए वो बेटर रहेगा शॉर्टेज कैलकुलेशन करने के लिए. हेलो. यस, अजय है. हाँ, सो ओके, जो वैल्यूएशन आ रहा है यू आर सेइंग कि T-1 में आता है. हाँ, RTRMS फाइल के अंदर ये कोलेटरल वैल्यूएशन जो रिप्लेस किया है उसका T-1 के रेट पे आता है. बट और शॉर्ट एलोकेशन, हाँ, उसमें हाँ, शॉर्ट एलोकेशन के अंदर आप लोग टी डे का मैंने ऑलरेडी एक क्वेरी रेज की है. यस, आई नो, वी आर वर्किंग ऑन दैट. वो थोड़ा टाइम में हो जाएगा रिजॉल्व. But isn't the short allocation also should be calculated on T-1? Because that's what happens in MG. In the MG, well, if I recall correct, when we report margin collections from the client, do we take the price of T or T-1? It should be T-1. It should be T-1. Yeah. So even the shortage file, you should calculate on the basis of T-1 and not T. है ना रुपेश भाई? Correct. Logically. Correct. So logically वही correct है. So I think otherwise your MGTM, we have been reporting margin collection in MGTM, and that has always been at T-1 rates. In fact, we are required to take T-1 rates. Yeah. But if shortage is calculated at T rates, then it becomes even the two figures go for a toss. हाँ, बराबर है. T-1 पे आना चाहिए. So in fact, it's a feedback for the shortage file, unless you would like to react. Yeah, Uttam sir, Rupesh ji, we'll take this, and we will update you on this. और एक क्वेरी ये थी कि हम लोग कैश मार्केट के लिए जो 20% का कैलकुलेशन करते हैं ना अपने इन हाउस के लिए, तो वहां पे हम लोग आउटस्टैंडिंग जो पोजीशन है उसको
कौन से रेट पे करे 20% कैलकुलेशन, क्योंकि जहाँ पे क्लाइंट ने इंट्राडे ट्रांजैक्शन किया है और बाद में डिलीवरी में कन्वर्ट हुआ ना, वहाँ पे वो वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट वर्क नहीं हो रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो एक्चुअल में लॉजिक क्या है उसका वो जानना था कि भाई जब क्लाइंट ने इंट्राडे भी ट्रांजैक्शन किया है और साथ में डिलीवरी भी किया है, तो कौन से रेट पे 20% लेना है। Could ICCL team throw some light on this? I'll repeat the question. When a client has been buying and selling Reliance the entire day, in the end he has a delivery of plus 100 shares. Correct. So he has done all the jobbing and buying and selling. Which price are we taking? It could be FIFO, it could be today's closing price, it could be highest of the day, lowest of the day, a weighted average of all the buys. So how do we calculate that 20%? Could ICCL throw some light on that? Uttam sir, we take the weighted average price. Weighted average of all the purchases? नहीं, वेटेड एवरेज प्राइस पे डिफरेंस आ रहा है। मैं डेली उसी क्लाइंट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जो क्लाइंट ने इंट्राडे ट्रांजैक्शन किया है ना, उसका वेटेड एवरेज प्राइस अपने आरटीआरएमएस फाइल के अंदर जो आ रहा है वो, और जो एक्चुअल मार्जिन में आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है। रुपेश जी, ये पर्टिकुलर केस आप मेरे को ईमेल कीजिए ना। मैंने मैडम आपको किया है 3-4 मेल केस आपको मेल किए हुए ऑलरेडी मटेरियल से। एक बार ना ये वापस मेल कीजिए, सीसी फोरम को दीजिए ना, support@brokersforumofindia.com. Members को ध्यान होगा, but I'll just reset. BBF has started a support desk, which is for compliance and operation issues, and it is manned by full-time employees of BBF. So उनका यही काम है, भाई members कुछ पूछो तो हम आपका problem solve करें, या आपके behalf पे हम MI से follow up करें, या जो भी. So it becomes easier that way. So anybody sends a mail to any claim corporation, any MI. Just send a CC to us so we know, even if it's just FYI, if you don't want to take us and take. Yes, it will be beneficial for all broker. हाँ, तो क्या एक आप सवाल पूछोगे, आपको जवाब भी मिल गया और फोरम को पता है इसके जवाब, तो दो जन और ये सवाल पूछेंगे तो हम डायरेक्ट जवाब दे देंगे, तो थोड़ा नॉलेज एक्सचेंज होगा। नहीं, एकदम करेक्ट है, करेक्ट। तो ठीक है, we'll await a feedback on how it is. But Rupesh bhai, if somebody asks you क्या होना चाहिए, so ideally it should be क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 20 हो जाना चाहिए ना, कि नहीं कि ट्रेड प्राइस के हिसाब से होना चाहिए, या मेरे ख्याल से FIFO में होना चाहिए, FIFO होना चाहिए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में जो ट्रेड बच गए वो डिलीवरी हुआ है, बराबर है, FIFO ही होना चाहिए। तो सुबह लिया, दोपहर को बेचा, शाम को लिया, तो जो लास्ट M2M गेन लॉस में चला जाएगा जो इंटरडे हो गया है, और जो लास्ट में जो बचा है वो FIFO, वो उसके ऊपर 20% आना चाहिए। तो लॉजिकली FIFO एक्चुअली MGTM में भी तो आता है। MGTM में क्या बेसिस में आता है, उसको रिवर्स कैलकुलेट करना, बिकॉज जो MGTM में जो फिगर आता है ना, वही आना चाहिए आइडियली। करेक्ट। इसके वो ट्राई किया था मैंने, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाया कि कौन सा रेट पे वो एक्चुअल में ले रहे हैं, इसलिए मुझे पूछना पड़ा। ओके, ठीक है। केशव बियानी जी का भी कोई इसी रिलेटेड कमेंट चैट बॉक्स में है। आई थिंक केशव जी आप बोल के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्या बोलना चाहते हैं केशव जी? केशव बियानी। हेलो सर, केशव हियर। यस केशव। Sir, like we have pledged, repledged a lot of government securities and sovereign gold bonds of ours and client, but the rate of which is taken by the CC, on which limit is given, and the rate as per Bhav copy does not match. So I want to understand which rate the CC takes, or from where they take the rate. So we also take the same rate. So there is a parity in the rate taken by the CC and rate taken by us. Yeah, for GSEC we take the rates from CCIL. So where is that file? So that basically we consume it internally and we do the valuation. So with regards provision of giving you this files, we'll just check if we can provide you a file on this. Or you can add in the Bhav copy, it will be very helpful in the closing price of the Bhav copy file. Okay, yeah, we will check on that. In fact, and even and even the haircut of few of the securities don't match with the CC haircut. So in a few cases which we were highlighted to the BSC CST team, like as per their portal, it is 5%, but the VAR file has it 10% haircut. So we have to actually manually go and edit everything and then upload it in the software. With regards government securities,
it is the haircuts are defined basis the liquidity of the particular securities, which ranges from 5 to 10%. Okay. Yeah, but Yeah. yeah. With sovereign, I think you are particularly referring to SGB cases. No, I'm referring to GSEC cases only. GSEC. The Can you just GSEC cases. email those ISN on ops@iccilindia.com? So we would I'll do it right check, away. we Yeah. would check the latest prices and we will inform you. Okay, I'll do right away. Yeah. Yeah. Keshav, do if possible mark a CC to support. I that. have already given it to the support team once. The BBF support team. Yeah, BBF support team. So I was in touch with them. So they said to raise it to the BSc concerned team. Okay. Yeah. Thank you. I'm surprised. But but again, team ICCL query. Is there one consolidated file? Whenever I replace securities, any kind of securities with you, you give me some limit and you deduct some haircut. You give me limit based on certain prices and you deduct the haircut based on certain parameters. Is there one consolidated file anywhere where I can get the prices of all the securities which are replaceable and at which price you give me the limits and where I can get the haircut rate of ICCL? Or I don't believe, in fact, I was looking for such a file, go and lay my hands on it. Or with a combination of files, which are the files we should combine to get these numbers? So there is one CP file which has the rates, but I think the GSEC rates and all are not inclusive in that. So we, yeah, so that's what. But CP will give the non-GSEC rates basically. So we will update that now, considering the member request and convenience of everyone. We'll provide a consolidated file with the rates and haircuts. Oh, that would actually make, so it will be easy for us to tally the exact number. Yes, yes. Give us some time. We will come. Perfect. Yeah. Perfect, Vijay. Thank you so much. Ambuji, your question, please. Poojaji, your question. हेलो Yes. सर अभी एक्सचेंज से फाइल लेट आ रही है कौन एक्सचेंज से सारी बिल फाइल वगैरह 2 दिन से नहीं तो दो चीजें आफ्टर 8 PM वो फाइल अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हमें तो इसमें दो चीजें एक तो बीआर फाइल की बात कर रहे हैं हाँ ओके सो एक्चुअली दिस एक तो बीआर फाइल इज गिवन बाय बीएससी and all this allocation is done by ICCL. Yes. अपने लिए दोनों same है, but actually में दोनों different है. In fact, ICCL used to have a software called OTB, where they used to give trade of all the exchanges in a single file. Is it still there? ICCL team, anyone remembers? No, ठीक है. So my office used to use that. So Pooja ji will take it up with BSc while the trade files are late. And in case trade files are late, we can always make an application. We can request ICCL because of delay in trade files. Please increase your allocation time for today. But in the EOD BRCM file, the trades of all respective exchanges come in BRCM file. And what time is that file given? Now the delays basically, they are observed because of this interop processes. You are also aware. So there is dissemination of various files, custody confirmation. So due to which some delay is observed. But we will discuss this internally with the team, like how we can. So what happens is due to that we are not able to generate the bills. Able to do allocation to clients. मैम पूजा उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. आप RTRMS यूज करती हैं? Yes. आपकी ऑफिस? Yes, RTRMS से तो मार्जिन का जजमेंट आ ही जाता है ना कि नहीं? हाँ, RTRMS से आ जाता है मार्जिन का. तो उस हिसाब से एलोकेशन तो कर ही सकते हैं. अच्छा. हाँ. वो मार्जिन लेके हम एलोकेशन कर सकते हैं. पर सारी फाइल्स, दूसरी सारी फाइल्स, BR फाइल्स वो सब तो नहीं आती ना. नहीं, BR फाइल ऐसे देखा जाए स्ट्रिक्टली एलोकेशन से कनेक्टेड नहीं. ओके, एकदम एलोकेशन के रूल पे जाए ना तो क्लाइंट को अब तो जो सौदा लिमिट देते हैं उसके पहले एलोकेट करना है. 1 फरवरी से तो वही करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सचेंज को टाइम पे फाइल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए. बीएससी फाइल 4.5 पौने 5 तक दे देती है, एनएससी भी 4.5 पौने 5 तक दे देती है. बेस्ड ऑन दैट अपने बिल जनरेट कर लेते हैं.
and early pay का process भी कर लेते हैं. But having said that, allocation has to be done pre-trade, strictly speaking. अभी खाली EOD monitoring है, फिर intraday monitoring हो जाएगी. तो इन files पे अपने depend नहीं कर सकते for a long time. Please try using RTRMS and plus set up systems and processes कि सौदा होने से पहले allocation हो जाए. Madam, just to ease out your query again, RTRMS में equity cash में there is a client position report. I assume your query is only for equity cash. So that client position report, it gives you details of your client wise, script wise, settlement wise, your value. तो उसका 20% भी निकाल के you come to know what is the margin. But in that trade to trade records come as netted, right? Yeah, the net quantity it comes. So that's a incompletion in that report. That's the only thing missing in that. Exactly. RTRMS से जो margin की file लेते हैं, it's not matched to margin file. बिल्कुल सही है, because RTRMS का जो है ना, वो normal margin लगाता है. किसी item में 100% margin हो सकता है, किसी में 15 हो सकता है. जबकि जो minimum margin file है, वो 20% के हिसाब से निकलता है. Yes. So it is not exact. It is just approximation. But इससे क्या आपकी penalty 100 रुपए लगने की जगह 1 रुपए लगेगी. या फिर एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि सारे अपने क्लाइंट को वो एलोकेट करेंगे जो अपने क्लाइंट क्रेडिट है, करेक्ट? यस. तो जिसका भी पोजीशन खड़ा है उसका जो लेजर में जमा वो क्रेडिट कर, उसको एलोकेट कर दो, तो पेनल्टी लगेगी नहीं. ओके. That's what we do in our office actually. तो उसके बाद खाली वो रह जाते माल बेच के जो माल लिया उसका तो थोड़ा जब तक एक्सचेंज की फाइल नहीं आती थोड़ा एक्सेल खेलना पड़ेगा. यस. एक और क्वेश्चन है सर, अभी आपकी जो शॉर्ट फाइल आती है ICCL से वो MGTM का मार्जिन और हमें लास्ट तो 5th नंबर का स्नैपशॉट दिखता है, उसके बाद हम एलोकेशन कर देते हैं. तो वो शॉर्ट फाइल में जो आप कंसीडर करते हो वो मैच नहीं करता मार्जिन की 5th नंबर के स्नैपशॉट से. अगर आपका अर्ली पेन रहेगा, कुछ कस्टडी कंफर्मेशन रहेगा, तो फिर वो 5th वाले फाइल में नहीं आएगा वो डिटेल्स. अच्छा, तो फिर हमें ये हमारा शॉर्ट तो हम जैसे चढ़ाते हैं फाइल तब तो शॉर्ट नहीं होता, पर बाद में ICCL हमें शॉर्ट दे देता है, तो वो तो हमें MGTM से ही पता चलेगा. और MGTM तो मार्जिन ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है आपको? मार्जिन ज्यादा लग रहा है और शॉर्ट आती है. जब हम फाइल अपलोड करते हैं तब तो शॉर्ट नहीं लगना चाहिए. तो इसीलिए आप एक काम कीजिए, आपके जो पर्टिकुलर क्लाइंट केसेस है ना, हमको आप ईमेल कीजिए. विल एग्जामिन. किया है हमने मेल, कल ही मेल किया था और सैंपल उन्होंने मांगा था तो हमने सैंपल भी दिया है, पर अभी तक कुछ आंसर नहीं आया वहां ICCL. आपका कौन से ईमेल से ईमेल आया है? kc.unjas के मेल ID से हमने मेल किया था. ओके. एंड यू हैड अ वर्ड विद आवर टीम? यस. ठीक है, तो वी विल चेक इंटरनली विद इन द टीम एंड विल रिवर्ट. विल अरेंज. सैंपल कोड दिया है. ऐसे हमारे 4 कोड्स आए थे तो जिसका शॉर्टेज था नहीं, पर शॉर्ट फाइल में उन्होंने हमें शॉर्ट दी थी. Anyway, Chetan bhai, will you also look at assist Pooja ji and try to get solved? Chetan bhai is from the BVF support team. He will try to assist. Sure, sir. Cool, Pooja ji. Okay. Paresh, your question, please. सर मेरा क्वेश्चन था EPI के लिए. EPI T डे और T+1 के लिए कितना कंसीडर करना है सर? T डे के लिए 80%, T+1 के लिए T-1 का 100%. और T डे के लिए यदि मंडे को आपने माल बेचा 100 रुपए का, मंडे शाम को अर्ली पेन कर लिया, तो मंडे के दूसरे सौदे के लिए 80 और ट्यूसडे को वो मंडे के सौदे का 100. T-1 का 100, T डे का 80. तब T1 to कंफ्यूज, मंडे को माल बेचा और मंडे शाम को अर्ली पेन किया, तो वो अर्ली पेन को मंडे को 80 रुपया पकड़ना है और ट्यूसडे को 100 पकड़ना है. ओके, ठीक है सर. और सर एक है ना, मेरे को है ना अपना रिप्लेस किया हुआ है, अदर सेगमेंट में रहता है और शॉर्टेज मेरा FNO में आया और रिप्लेस मेरा कैश में है, तो उसको कंसीडर करेंगे? क्योंकि शॉर्टेज में तो कंसीडर नहीं, शॉर्ट एलोकेशन में तो आ रहा है हमारे अभी रिपोर्ट. नहीं, कहा से उसमें पेनल्टी नहीं लगेगा, बट कैन ICCL कंफर्म है? Yes, we will be considering and computing the figures across segments after considering if there is any excess collateral available in other segments. The final files will be provided in line with the circular that we have issued today. I would request members to please refer to the circular to get further details.
बट हरीश भाई 100 बात की एक बात, दूसरे सेगमेंट पे एक्स्ट्रा कोलैटरल पड़ा हुआ है, एलोकेशन पड़ा हुआ है, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके। तो सर एक सेकंड क्वेश्चन है सर, अभी हम लोग जो एलोकेट करते हैं वो अपना आरटीआरएमएस से फाइल लेके मार्जिन के हिसाब से मैं एलोकेट करता हूँ, तो मार्जिन कुछ कम ज्यादा हो जाती है लास्ट में फाइनल में। होगा ही। हाँ, तो मेरा एक्स्ट्रा एक सेगमेंट में मेरा एक्स्ट्रा एलोकेशन किया हुआ है, तो ठीक है, पेनल्टी नहीं लगेगी। शॉर्ट एलोकेशन आ रहा है, वो कंसीडर करेंगे? हाँ करेंगे, पेनल्टी नहीं लगेगी। शॉर्ट फाइल में आ जाएगा, लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, यानी फंड भी कंसीडर करेंगे और रिप्लेस भी कंसीडर करेंगे, दोनों सेगमेंट। एलोकेशन, रिप्लेस एलोकेशन एंड मनी एलोकेशन। ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ हरीश भाई कुछ बोल, वापस हाथ उठा लीजिए, आपको दिक्कत। हाँ नीरज जी, योर क्वेश्चन प्लीज। नीरज मटालिया जी। हाय, दिस इज संजय। संजय भाई। हाँ जी। मेरे को एक रिक्वेस्ट करना था आईसीसीएल को। आरटीआरएमएस में जो ट्रेडिंग मेंबर का लिमिट यूज है उसमें पोजीशन आता है फॉर कैश मार्केट। तो प्रीवियसली उसमें अमाउंट आ जाता था दैट पर्टिकुलर पोजीशन का कितना मार्जिन ब्लॉक हुआ है, तो अभी वो हटा दिया है आफ्टर दिस एलोकेशन का जो नया वर्जन आया उसमें। सो जस्ट एक रिक्वेस्ट है आईसीसीएल टीम को कि वो अगर फिगर आ जाएगा तो वी गेट दैट फिगर सेटलमेंट वाइज, सो थोड़ा कन्वीनियंट गिरता है। बट वो दूसरा रिपोर्ट है ना विजेता बोली थी, सेटलमेंट वाइज किधर आता नहीं है। सो आता है दूसरा रिपोर्ट। विजेता, कैन यू टेल दैट रिपोर्ट अगेन व्हेन यू आर रिफरिंग टू? सर आपने आरटीआरएमएस में क्लाइंट मार्जिन ब्रेकअप रिपोर्ट देखा है क्या? उसमें क्लाइंट वाइज आता है, ये पोजीशन वाइज है ना, किसका अर्ली पे इन हो गया, जिसका नहीं हुआ। ओके। सो जो क्लाइंट वाइज मार्जिन आता है ना, उसमें क्लाइंट का पूरा मार्जिन आ रहा है। दैट इज अगेन वी डोंट हैव द ब्रेकअप ऑफ द सेटलमेंट, जो भी आज 97 और 98 है, तो सेटलमेंट वाइज ब्रेकअप नहीं आता है। मैं अभी जस्ट 1 सेकेंड में ऑनलाइन ही चेक कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक वो एक आपको पोजीशन दिखाता है। आई अंडरस्टैंड, वो पहले हम लोग दिखाते थे सेटलमेंट वाइज। फ्रॉम देयर वी यूज्ड टू गेट सेटलमेंट वाइज, क्लाइंट वाइज वी कैन, हम लोग ये करके कर लेते थे वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करके, लेकिन अभी सेटलमेंट वाइज नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो मैं इंटरनली मैं अभी आरटीआरएमएस रिपोर्ट चेक करती हूँ। उत्तम जी, टिल सच टाइम यू कैन टेक द अनदर क्वेश्चन। रुपेश जी, योर क्वेश्चन प्लीज। रुपेश जी। हर्ष जी, हर्ष गांधी जी, योर क्वेश्चन। Yeah, hello. Police sir. Yeah, good evening, sir. Sir, it's a basic question. I just wanted to know, is it compulsory for the client to pledge the shares before trading? Pledge or repledge? If a new client has come. A client is supposed to give margin to the broker before trading. ये तो बहुत पुराना कानून है। हाँ, नहीं, ठीक है, नहीं सुनिए, ledger balance, आगे बढ़ रहा हूँ। सर रुको। कोई भी क्लाइंट आपके पास आप सौदा करता है, हाँ, तो ब्रोकर को सौदा मारने से पहले एडवांस में मार्जिन लेना जरूरी है। नहीं मैं चेक सुनो तो बोले, तो आपने सवाल पूछा, जवाब तो देंगे। Yes. तो या तो आप चेक ले सकते हो या शेयर प्लेज ले सकते हो, दोनों में से। ओके, ठीक है। अब आपने ले लिया तो काम चल रहा था। अब नया ये है कि ना केवल आपको राहुल, प्लीज रिमेन ऑन म्यूट फॉर a few minutes. So now the thing is, not only you have to collect it from the client, you have to allocate it to the CC, either by repledging the shares or by allocating some money. Only then it will work out. Now अभी तो खाली end of day check कर रहे हैं, but 1st February से before the trade happens वो real time check होने वाला है. So this is the legal background. I hope that clarifies. Yes, sir. Go further. Yes, please. Go ahead. Harshji, your question, please. Ambuji, your question, please. Ambuji. Yes, sir. Hello. बोलिए।
तो आरटीआरएमएस में जो कोलेटरल वैल्यू आती है, क्लास की कोलेटरल दोनों में डिफरेंस आता है सर। वो तो थोड़ा बहुत की बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा, कल मैंने मेल भी किया है सर। इनफैक्ट आज एक और मेंबर भी मुझे ये बात बोल रहे थे कि क्लास का वैल्यूएशन कोलेटरल का आरटीएमएस कोलेटरल वैल्यूएशन में कुछ अच्छा खासा फर्क है। सर ड्रास्टिक चेंजेस है सर, करोड़ों करोड़ों एक कोड में करोड़ों का डिफरेंस था। अच्छा, ICCL team will have to look into this. This is strange. But shortage file में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं शॉर्टेज में नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन एलोकेशन करने समय दिक्कत आ जाती है सर। हाँ, सब कंफ्यूजन हो जाता है, कितना करो कितना। हाँ, और वन मोर थिंग सर, जो जैसे सिंगल कोड को मुझे एलोकेट करना होता है, मुझे गो थ्रू फाइल ही करना पड़ता है सर। क्या वो सिंगल एलोकेशन के लिए हम कुछ ICCL दे सकती है क्या कि हम? नहीं, वो तो अभी भी उन्होंने बताया ना कि जल्दी ये लॉन्च करने वाला है स्क्रीन वाला, मतलब 2 3 4 का लोड करना तो स्क्रीन से कर सकेंगे। हाँ, स्क्रीन बेस। हाँ, कर लेंगे। Uttam sir, sorry, I was on call. I missed the first part of the question. the same issue that was raised today in the afternoon. This member has noticed that the valuation in class of the security is replaced, and the valuation in RTMS of the security is replaced are varying by crores in couple of cases. अंबु जी, ये आई थिंक कपिल जी ने इशू रेज किया था, yes, but I think that got वो सॉर्ट हो गया है। क्यों हो गया तो अच्छी बात है ना, कि कल मैंने देखा तो मैंने मेल किया था। नहीं, आज कपिल जी का मेरे से बात हुआ था, and that issue is sorted. But why if any other member faces this problem, what should they do? Is it that issue is resolved totally? Sir, this issue is like अभी it just came, even मतलब there is no ऐसा issue नहीं है. So if such issue comes, then immediately if it is brought to our attention, then we can just resolve immediately. But sometimes due to some connectivity or some, there can be some मैडम बेसिकली शायद म्यूचुअल फंड क्रिएट वगैरह का कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि उस क्लाइंट के पास केवल म्यूचुअल फंड ही था मैक्सिमम। हाँ, वो ही म्यूचुअल फंड का ही था, वो कर दिया है सॉर्ट। ओके, ठीक है, हो गया, वो कपिल जी से बात भी हो गया। अच्छा, ठीक। But thank you for pointing it out, Abhijit. So thank you. Harish ji, your question please. Harish ji. हाँ सॉरी सर, एक और था क्वेश्चन सर। ये ना मल्टीपल सेटलमेंट में EPI में इशू हो रहा है, टाइम लिया, जैसे कल पे आउट लेट आया और EPI लगाने के लिए लेट हो गया उसके लिए, तो यानी हमारा शॉर्ट एलोकेशन ज्यादा आ गया, क्योंकि EPI हुआ नहीं था मेरा वो टाइम तक। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है सर? टाइम एक्सटेंड करेंगे कि कैसा? जो EPI नहीं हुआ इन द सेंस कि EPI डिपॉजिटरी में हो गया और CC में लोड नहीं हुआ, कि EPI हुआ ही नहीं? EPI हुआ नहीं, यानी तो टाइम के बाद हुआ है। हो गया ना? हाँ, तो आज ही तो ICCL ने एक सर्कुलर निकाला है कि ऐसे केस में यदि आपका EPI हो जाए तो T+4 में आप बोल सकते हैं EPI हो गया, आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। अच्छा, तो शॉर्टेज में आया, लेकिन वो जब आप पेनल्टी फाइल दोगे फाइनल, तो उसमें नहीं आया? नहीं, उसमें लग सकता है। आप वो एक आज का सर्कुलर पढ़िएगा। उसके अंदर क्या है कि जैसे 2-3 कोड्स के लिए दिया ना, T+4 में भी आप मार्क कर सकते हो कि भैया इस पे पेनल्टी ना लगाया जाए बिकॉज किसी और CC में पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। वैसे उन्होंने यदि EPI डिपॉजिटरी में हो गया लेकिन CC में कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप मेंशन कर सकते हो कि भाई EPI हुआ है तो उतना आपको पेनल्टी नहीं लगेगा सेल साइड मार्जिन पे। ओके, तो अभी ये जैसे पेनल्टी का जब आएगा हमको रिपोर्टिंग, नहीं, ये पेनल्टी का रिपोर्ट आने से पहले ही आपको अपलोड करना पड़ेगा अगले 4 दिन के अंदर। अच्छा, तो अभी तक आया नहीं ना सर ये कुछ भी ऐसा? आ गया, आज ही आया है। Uttam, let me step in. The report will come at the end of the month. Once the report is generated, the members will have 4 days in which they have to revert to us. So that will be for this month. It will come on 1st of September. Members will have time till 7th of September to report for this file for August. So similarly, every month at the end of the month, in the first working day of the next month, the report will be issued for the full month, and members will get 4 days from that, 4 working days from that day to basically revert with the reason codes for each of the penalties that are levied. Thanks for the clarification, Rohan. I think I had it wrong. Thanks for. यानी रोहन मंथली दोगे आप, वीकली ऐसा नहीं दोगे? नहीं, वो हर दिन का नहीं होगा, सीधा महीने में एक रिपोर्ट आएगा, फिर 4 दिन का टाइम मिलेगा, रिपोर्ट में बताओ कि ये पेनल्टी सही है, पेनल्टी खोटा है। तो मंथली में सर रिमाइंड करना, हमको रिमेम्बर करना, हमको याद रखना, वो थोड़ा। आप डेली करना चाहते हो कि मंथली करना चाहते हो?
हाँ वीकली या वैसा ठीक नहीं मंथली रहेगा? करना चाहते हो डेली करना चाहते हो? नहीं डेली से तो ठीक ही रहेगा, मंथली फिर तो मंथली करो ना, तो क्या ऐसे कोई काम की कमी थोड़ी है जो है और आपको सर वीकली करना है। और या तो यार देखो शॉर्टेज फाइल तो आ रही है डेली, उसको कहीं नोट करते रहो, इसका यही रीजन है। तो मंथ में एक बार मेहनत करके सब क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? और सर अभी एलोकेशन हो गया तो सेग्रीगेशन बंद होगा क्या आगे? बिल्कुल। अरे पूरे रामायण होगी, राम की सीता को बात कर रहे हो। सेग्रीगेशन एलोकेशन आपस में कनेक्टेड है। मैंने उसको ये वाला वापस यूट्यूब में जाके मेरा वीडियो वापस देखिएगा, ये वाला वेबिनार का शुरू के 10-15 मिनट में बोला सेग्रीगेशन तो जान है एलोकेशन के, बिना सेग्रीगेशन के एलोकेशन नहीं हो सकता। तो दोनों रहेगा मतलब? तो ये पैरा 11 उससे चलता है, आप देखिएगा। Uttam sir, just addressing to Mr. Sanjay's question on this settlement-wise margin breakup report. Presently, it is not available. Initially, it was there, but there was a system design change post allocation. So we gave a overall client-wise margin breakup report, but we are internally working on such report. So once it is live, we'll update the market. Thank you. Rahul ji, your question, please. Rahul ji. Yeah, a few suggestion for ICCL. अपना RTRMS के अंदर में yesterday what happened up was I made all the required margins as nil, but आज कल रात को जो पेनल्टी वाला फाइल आता है ना शॉर्ट एलोकेशन वाला, वो शॉर्ट एलोकेशन के अंदर में फिर भी मेरे ना कुछ आउटस्टैंडिंग दिखा दिए थे, wherein my margin requirement was brought down to 80% as compared to 100%. So, there is some kind of a mismatch between the data which has been reflected on RTRMS and the short allocation wala file which comes late at night. So, which segment are you referring CM. So RTRMS minimum margin दिखाता ही नहीं ना? Minimum margin हाँ नहीं, but उसके अंदर में जो अपना margin requirement आता है, suppose there is a margin. Rahul, we touched on issue. I'll tell you again. In the cash market, in RTRMS, the rate of margin is not the 20% flat margin. Right. It is VAR plus ELM. Right. If it is suppose कोई बहुत ही liquid item काउंटर में तूने काम किया और सीसी ने खाली 15% मार्जिन लगाया, right, और तूने 15% ही एलोकेट किया, तो तेरा शॉर्टेज जाएगा बिकॉज तुझे 20% एलोकेट करना था। मैंने तो ज्यादा एलोकेट किया है। मैं तो ये अपना जो भी वार ELM वगैरह का कैलकुलेशन करने के बाद में जो मार्जिन आता है उसके ऊपर में 20% का एलोकेशन किया। तो यदि तूने 15% का 20% निकालेगा तो 3 होता है, 15 और 3 18 होता है। नहीं। सपोज माय मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1 लाख रुपी। सपोज देयर इज अ आइटम जिसने तो 10 लाख रुपए का माल लिया, यस, उसमें 10% मार्जिन है। हाँ, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना आएगा? 10% लाख रुपया। और तूने कितना एलोकेट किया? 1,20,000। ओके, 20% के नीचे है। ओके 2 लाख करना था, 2 लाख करने का था। ओके, नॉट 20% ऑफ मार्जिन, इज 20% ऑफ टोटल पोजीशन यार, ऑफ द टोटल। गॉट दैट। एक दूसरा RTRMS में अपने ये एलोकेशन सिस्टम वगैरह होने के पहले ब्रोकर लेवल के ऊपर में कितना मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है, पहले वो सिस्टम आता था। आजकल वो RTRMS सिस्टम में से गायब कर दिया है। Yesterday I brought the same thing into notice of Rahul Agrawal also, who is into your RTRMS department. But इस पॉइंट एक तो ओवरऑल तो देखना ही नहीं है, तो खाली प्रो का देखना है। नहीं, प्रो का देखने का है, बट जिसने अभी जैसे सपोज मेरे पास में 5 करोड़ रुपया है, मैंने क्लाइंट को है ना 4.5 करोड़ रुपया अलोकेट किया, 50 लाख रुपया प्रो के लिए रख के रखा है। आई एम नॉट डूइंग प्रो ट्रेडिंग ऑन डेली बेसिस, राइट? अभी उसके अंदर पता तो चलना चाहिए कि मेरा है ना एक्चुअल में 4.5 में से कितना यूटिलाइज हो रहा है और कितना मेरे पास में बैलेंस है, सो दैट आई डोंट हिट द एक्सचेंज लेवल RRM. So point is, out of 4.5, how much is used? You'll get in client-wise report, right? You're getting it. Right. Yeah. Now, अब what? उससे RRM नहीं होगा, जो 50 लाख बच गया, यदि 50 लाख में से 45 यूज हो गया, तो दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, तो टर्मिनल अपना ऑटोमेटिकली तो तुझे 45 पे नजर रखना है। ओके। तो ये पूरे 5 पे नजर के मतलब सपोज एक क्लाइंट उसको 2 करोड़ तूने एलोकेट किया, उसने 1 रुपए का भी सौदा नहीं किया, राइट? तो एनीवे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू खाली तेरे 50 लाख की है। यस, उस पे नजर रखना, वो रिपोर्ट में दिखता है। ओके, किधर में वो रिपोर्ट, मैं किससे पूछ सकता हूँ ये चीज के बारे में? तृप्ति बोल रही हूँ, राहुल जी। यस तृप्ति। हाँ, उसमें आपको TM लेवल
पे जो लिमिट टीएम लिमिट यूज रिपोर्ट है ना, उसमें हाँ आपको लिमिट यूटिलाइजेशन का कॉलम है। कल भी मैंने आपको एक बार जस्ट बताया था ना कि यस 0.5 समथिंग कुछ आ रहा था, वही यस एग्जैक्टली राइट। परसेंटेज आपको मॉनिटर करना है फॉर आरआरएम इन एंड आरआरएम आउट। नहीं बट कल जैसे मेरा बड़ा सौदा हुआ था उसमें हाँ ना मेरा 0.5% एज यू राइटली सेड वी हैड अ वर्ड हाँ ओवर द फोन आल्सो, हाँ वो राइट 0.5% यूटिलाइजेशन आ रहा था, बट देन करेक्ट। दिस शुड हैव बीन मोर एज कंपेयर्ड टू व्हाट माय नहीं नहीं डिपॉजिट्स हैव बीन एग्जैक्टली मैं जैसे यूटिलाइज्ड। कि आपका बेसिकली कोलैटरल क्लाइंट लेवल पे अलोकेट है, करेक्ट। हाँ तो राइट टीएम पे ये उसका ऑब्लिगेशन ही नहीं है, वो तो क्लाइंट लेवल क्लाइंट पे का सब पैसा यूज हो गया ना, क्लाइंट को जो एलोकेट किया वो यूज हो गया, प्रो का ओके पैसा सो तो टच ही नहीं हुआ, ओके प्रो का समझ थोड़ा गया। सा टच हुआ, पूरा नहीं। टच राइट 0.5% जो टच हुआ है हाँ वो चीज। हाँ हाँ ओके गॉट ओके दैट गॉट ऑब्लिगेशन दैट। है वो राइट टीएम लेवल पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि टीएम का ऑब्लिगेशन ही नहीं बन रहा है क्लाइंट के लिए। करेक्ट करेक्ट। Question from somebody from Xiaomi. Your screen name Xiaomi Xiaomi phone. M200. Somebody is connect with the Xiaomi phone. At least rename yourself so we know हम किससे बात कर रहे हैं. हेलो Yeah. Ambuji, your question, please. Ambuji, your question. राहुल जी क्वेश्चन already क्लियर taken, हुआ sir. था? हेलो हाँ जी बोलिए अम्बुजी। So already taken, so already placed. Okay. Oh. Yeah. Looks like we have taken no more questions. We have kind of taken all the questions. Come, so one more. Yeah, sure. Neeraj ji, your question. Sir, this is Neeraj here. This is not a question, but I really like to congratulate ICCL for a different kind of system, and mostly members of ICCL has not faced many problems in terms of allocation. So particularly that up and down wala kuch bhi nahi hai, and that is I think the best possible system that ICCL has given. We really appreciate what ICCL has done for this thing. But sir, Neeraj ji, thank you for those kind words. And सची ये मैं ICCL मेंबर से टीम में जब भी मिलता हूँ ना, पहले तो 5 मिनट उनको बोलता हूँ कि मुझे उनसे क्या क्या चाहिए, बट एंड में 2 मिनट में बोलता हूँ कि आपने जो भी दिया है सच्ची हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट रहा है। आज के तारीख में भी कोई ICCL का रिस्पॉन्स फाइल आपको 1 से 1.5 मिनट में आ जाता है। सारा इफेक्ट लग के RTRMS आपके रात के 8 बजे 9 बजे तक चालू है, देखते रहो क्या हो रहा है, एलोकेट किया क्या हो गया, आराम से सुकून की चैन लेके रात को सो सकते हो। एटलीस्ट यू नो व्हाट हैज हैपेंड। Exactly. It is of course हमारे तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होता, हमको 20% कॉलम भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट वो नहीं जितना भी दिया है वो भी हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा दिया है। रियली टीम ICCL, we as all the claim members of ICCL really relieved by having a very sensible team looking at the way you've designed the systems. We also like to point one more point that ICCL team has always been available on phone. Means this is really appreciable. They must be attending to so many members, but they have always been on phone whenever we needed them. They have tried and guided. I can see there are at least 3 personals of ICCL right now on this webinar, and at all means I think everything is appreciable in that sense. Thank you so much, Neeraj. I think even the officer of MIIs वो भी इंसान है, कुछ अच्छा करे तो कुछ अच्छा बोलना भी बनता है। Really appreciate what you said, Neeraj. Really appreciate it. Thank you so much. Thank you, team. Thank you, sir. Thank you. Paresh ji, your Thank question. you very please. much, sir. Hello, good evening. बोलिए सर। I totally agree with Neeraj ji what he mentioned about ICCL team as such for providing us this good reports and features as such in RTRMS as well as class. Along with this, while referring these different reports, we have few suggestions also which I would like to share with you all. सर एक तो ये है कि जो आज हमें ट्रेडिंग लेवल पे डिटेल्स मिल रहा है क्लाइंट मार्जिन का, उसमें अगर प्रो का भी इंक्लूड किया जाए डिटेल्स तो वो एनालाइज करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा, स्पेसिफिकली फॉर RRN। अच्छा, आप बोल रहे प्रो अलग से पढ़ा उसको सेम रिपोर्ट पे रख दें? हाँ,
सेम में अगर जैसे क्लाइंट का डिटेल्स आ रहा है उसी तरह से प्रो भी एक क्लाइंट हो और उसका भी जो एलोकेशन या तो फिर उसका जो यूटिलाइजेशन है वो दिखे तो वो हेल्पफुल होगा स्पेसिफिकली फॉर आरआरएल। वो तो दूसरी जगह दिख रहा है ना सर, दो जगह पे अलग अलग जाना पड़ रहा है क्लाइंट अच्छा लेवल ठीक पे है, अलग। मतलब एक ही स्क्रीन में आ जाता तो अच्छा रहता। चल ठीक है, फीडबैक नोट। हाँ नहीं, पर एक पॉइंट ऐड करना है। स्पेसिफिकली प्रो का मार्जिन है ना, आपको रिफ्लेक्ट होता है टीएम लिमिट यूज रिपोर्ट में, और वहां पे ही आपको आरआरएम का डिटेल्स मिल जाएगा, मतलब हाँ, लिमिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज। हाँ, पर वो आरआरएम में भी एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अल्टीमेटली क्लाइंट के लिए भी यूटिलाइज होते हैं प्रो के फंड्स, जहां पर भी मतलब कि उसके कोलेटरल नहीं है वहां पर भी कैश यूटिलाइजेशन हो रहा है, एज वेल एज इन अदर सिनारियोज जहां पर मतलब कि 90% हिट हो चुका है या 100% के नजदीक है, तो वहां पर भी प्रो के यूटिलाइज हो रहे हैं। तो वो टोटल नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ प्रो का जो यूटिलाइजेशन आज हो रहा है उतना ही पता चल रहा है। उसमें बेसिकली ना आपको क्लाइंट ट्रेडिंग मेंबर लिमिट यूज रिपोर्ट में क्लाइंट शॉर्ट मार्जिन करके कॉलम है, वो कॉलम में आपको जो क्लाइंट का ऑब्लिगेशन है जो टीएम पे ऐड हुआ है वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। देन क्लाइंट मार्जिन कॉलम है जिसमें प्रो का मार्जिन होगा। ओके, देन ये दोनों का ऐड करके आपको एक्चुअल मार्जिन रिफ्लेक्ट होगा जो प्रो लेवल पे लिमिट यूटिलाइजेशन के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज हो रही है। मैं एग्री कर रहा हूँ मैं, पर फिलहाल मुझे मतलब कि एट अ सिंगल गो मुझे वो डिटेल नहीं मिल रहा है, मुझे वो कंप्यूट करना पड़ रहा है मैन्युअली। नहीं, आपको कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहिए तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जैक्टली कैसे। जरूर। ओके, सेकेंड जो ऑलरेडी बीबीएफ ने रेज किया हुआ है कि अगर 20% मार्जिन का डिटेल्स आ जाए आरटीआरएमएस में तो वो हेल्पफुल होगा। तो वो जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आप देंगे उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तीसरा जो था वो करंटली जो है प्रॉप का मार्जिन जो यूटिलाइजेशन है, जो जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज टर्म्स में एज वेल एज फाइनली मतलब कि दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी जो यूटिलाइज हो रहा है, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ कोलेटर्स पे नहीं बट कैश कोलेटर्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम लोग वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए था हमें। ओके। और इसके अलावा एक जो कॉमन रिपोर्ट अगर कुछ मिल सके हमें जहाँ पर जो भी सीएम कॉमन मीन्स अक्रॉस सेगमेंट्स एक ही सीसी के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पर अगर एक ही रिपोर्ट में अगर हमें डिटेल्स मिल सके तो वो भी हेल्पफुल होगा, तो वो इंस्टेंट मॉनिटरिंग और फास्ट हो सकता है। So I'm sorry, can you repeat the last part See, of it? instead of again, segment wise report, if you get a consolidated across segment reports, just a suggestion, please make a note. So we will try, give us some time. Yeah. We'll try These are and Paresh bhai, as Paresh bhai mentioned, these are just suggestions. Please take a note. जो जब भी कर सको जैसे भी कर सको। हाँ, इसके अलावा एक रिक्वेस्ट, ये अप्रूव सिक्योरिटीज का जो लिस्ट हमें शेयर होता है आईसीसीएल के साइड से, तो वो ऑलमोस्ट मंथ एंड में होता है या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ न्यू मंथ होता है। तो ये रिपोर्ट टेंटेटिवली अगर एक हफ्ता पहले मिल सके तो हेल्पफुल होगा। और इसके साथ में जो इसमें से आउटगोइंग सिक्योरिटीज है जो निकलने वाले हैं, जो नेक्स्ट मंथ में अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं रहेंगे, उसका लिस्ट भी अगर अलग से मिल सके तो वो हेल्पफुल होगा। तो उससे हम लोग हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट के जो प्लेज किए हुए रिप्लेज किए हुए सिक्योरिटीज है वो उनसे बात करके उसकी जगह पे दूसरे सिक्योरिटीज के लिए हम लोग अरेंजमेंट करवा सकते हैं। Yeah, this is a problem actually. Every day we check, ये securities निकल गए, हटाओ. So if we get there's no report actually. सब view करके देखते हैं ना परेश भाई अभी क्लास में। हाँ सर। तो क्लास में एक न्यू होल्डिंग रिपोर्ट है, उसके अंदर नीचे आ जाता है कि ये सिक्योरिटीज आर नो लॉन्गर एलिजिबल, प्लेज पड़े हुए। पर उत्तम भाई उसमें भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का लिस्ट इफेक्टिव 1st of एवरी मंथ होता है नॉर्मली। हाँ, और बीच में ये चेंज जो होता है, लिस्ट है वो तीसरे दिन चौथे दिन बदल जाता है। मिल रहा है। Correct. We actually approve securities list and disapprove securities, whatever. Approve which is we need some days in advance if possible. And of course, I'm sure
course, This is Gaurav here. We are working on it. You will Okay, get you are? 10 days prior. Perfect, We are perfect, working on perfect, perfect. It becomes so much easier. Yeah, we are working on it. सर और इसके साथ में अप्रूव्ड लिस्ट का जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का जो लिस्ट मिल रहा है हमें, फिलहाल हमें 3 डिफरेंट शीट्स में मिल रहा है। मतलब बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स अलग, शेयर्स अलग, ये 3 जगह ना। और उसके अलावा जीसेक के लिए अलग है, और कैश के लिए अलग है वापस, मतलब विच आर कंसीडर्ड कैश इक्विवेलेंट। ये सब कुछ अगर एक ही फाइल में सिंगल मिल सके, so it becomes so easy to process. Yes, cash or non-cash. Noted, sir. Noted. Noted. So with single file we can yes, get all the details updated. Yes, Paresh. Apart from this, क्लास को लग के भी हम लोग के कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे हैं कि जहाँ पर हमें मतलब इश्यूज फेस करने पड़े हुए हैं। इसमें से एक जो है वो अभी भी फिलहाल हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हम लोग का अनएलोकेटेड कोलेटरल रिपोर्ट जो है उसमें अननोइंगली पता नहीं, मतलब एवरीडे एक अमाउंट जो है वो अनएलोकेटेड में रहता है। उसमें से मैं एलोकेट कर भी देता हूँ तो वो एलोकेट हो जाता है क्लाइंटों को, बट सेकेंड डे मॉर्निंग जब ये आते हैं हम लोग देखते हैं तो हमारा जो भी प्रॉप का एलोकेशन इन कैश है या डेरिवेटिव्स है वो किसी में से एक में से वो उतना अमाउंट निकल के वो एग्जैक्ट अमाउंट उतना ही अनएलोकेटेड में रह जाता है। How is that possible? उतना ही अमाउंट आता है उत्तम जी। Very interesting observation. Please, अगली बार ऐसा हो तो can you share that observation with ICCL with the CC2 forum? So, yeah, definitely, Uttam ji. I will share that information with both of you. Again, a request to all the members: please send your observations to Brokers Forum office. Just mark a copy to us. It's very interesting. So, Paresh bhai, usually जब हम किसी टॉपिक पे आते हैं तो वो किसी और टॉपिक हम डिस्कस नहीं करने देते, ठीक है? आपके सजेशन बहुत प्यारे हैं, so please continue. Thank you, Uttam ji. They are connected to allocation actually in a way. इसके अलावा हम लोग ने जो ऑब्जर्व किया हुआ है, जैसे अभी एक हमारे बंधु ने कहा कि उनका मार्जिन जो देख रहे थे, मार्जिन वैल्यूएशन कोलेटरल क्लास में जो है वर्सेस जो आरटीआरएमएस में उसमें डिफरेंस था, या वो म्यूचुअल फंड यूनिट का प्रॉब्लम था, लेकिन लगता है सॉल्व हो गया। उसी तरह से हम लोग ने एक ऑब्जर्वेशन ये देखा हुआ है कि स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एक्शंस जो हो रहे हैं, मतलब रिसेंट एक एग्जांपल था टाटा स्टील का जहां पर स्प्लिट हुआ 1:10। वहां पर हुआ ये है कि उसमें जो प्राइस है एक्स प्राइस होने की वजह से वो प्राइस जो है वो 1/10 लिया गया। हाँ, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा। जो है वो ओल्ड सिक्योरिटीज के हिसाब से ही दिखाए गए और उसका वैल्यूएशन उसके हिसाब से कंसीडर किया गया। तो ये सिनेरियोज में अगर टाइमली मतलब वैल्यूएशन अपडेट की जाए और आईएसएन के हिसाब से भी वो अपडेट हो तो वो अच्छा होगा। और उसका कुछ क्लाइंटों ने वो सिक्योरिटी सेल भी कर दिया था, तो उसका रिलीज का रिक्वेस्ट भी हम दे नहीं पाए क्योंकि नया आईएसएन में वो सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं थे। Okay. Noted, Paresh bhai. All these points are being noted by both ICCL team and Brokers Forum team. So. Right, sir. And sir, couple of more things are there. 2-3 और क्वेरीज है। बोलिए। इन केस ऑफ रिप्लेस सिक्योरिटीज जो होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम जब भी हम लोग कर रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है हमें वो नेक्स्ट डे पे दिखाया जा रहा है। Yeah, we face a similar issue. Okay, so yeah, we faced a similar issue. But is it correct, ICCL, that it is end of day? The replace securities value is given next day. So what time depends what time you have replaced the securities, परेश जी आपने कब किया था रिप्लेस? रिप्लेस मॉर्निंग में भी होता है, दोपहर को भी होता है, तो इसका कोई अगर कट ऑफ टाइम अगर आप लोग शेयर कर सके कि बाय दिस टाइम अगर ये हो रहा है तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे पे चला जाएगा, तो वी वोंट माइंड, बट देन एटलीस्ट वी विल हैव दैट क्लैरिटी इन आवर माइंड कि इसमें मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग टाइम स्लॉट्स ना एक यूजर गाइड में अपडेट कर देंगे। अभी फिलहाल ये एलोकेशन की वजह से वी हैव मेड आवर टाइमिंग्स अ लिटिल फ्लेक्सिबल, you know, considering member ka request, but we'll publish in the user guide the time slot so that all members take a note of the same and accordingly abide by that. But having said that, if I replace shares today at 2 o'clock,
Is it or say even during the day? Suppose the timelines is repledge will be limited to be given by at say 4 o'clock. So will it appear in RTRMS by 4 o'clock, whatever the time you set? Is that the right place to look? So once the file is given to us by the depositor, it's immediately processed, and you can check the limits in both collateral. But do you think there could be a situation कि somebody is placed at say 12 noon and उसको पूरे दिन नहीं मिला, अगले दिन सुबह मिला? इतना तो नहीं हो सकता. Is it possible? Sir, it can be possible provided if there is any depository issue. Only if there's a depository issue. Okay, fine. So okay. ऐसा कुछ तो अगर member हमको urgently अगर बता सकता है, so you know it's like during the day so many files are coming over. So अगर ऐसा कुछ case रहेगा and immediately if it is brought to our notice, then we'll definitely look into it on an immediate basis. All right. Okay. Yeah. Note. हाँ परेश भाई, please continue. Yeah. इवन रिप्लेज रिक्वेस्ट जो है हम लोगों को 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि इमीडिएट और एंड ऑफ डे. रिप्लेज रिलीज या वो रिक्वेस्ट अगर इमीडिएट में दे रहे हैं तो उसका कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए रिलीज होने के लिए, क्योंकि हम लोग ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि 4 बजे आफ्टर 3:30 मार्केट एंड हम लोग जो भी पोजीशन है वो देख करके प्लेज सिक्योरिटीज को रिलीज करवाने के लिए रिक्वेस्ट अगर देते भी है बिफोर 4 o'clock, तो वो रिलीज होके हमें 6 बजे के करीब आते हैं. काफी टाइम, एवरी टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट काफी टाइम 6 बजे के करीब आ रहे हैं. तो इसके लिए भी अगर कुछ आप सेट कर सकते हैं टेट जैसा कि मतलब टर्न अराउंड टाइम इसका इतना होगा कि 15 मिनट से आधा घंटा मैक्सिमम, तो इट विल बी हेल्पफुल. Yeah, we'll review this. We will review this. And इंटर सेगमेंट रिप्लेज ऑफ शेयर्स अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे आप लोग ने ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर मेरा प्लेज एक सेगमेंट में किया हुआ है उसे मुझे रिप्लेज एक सेगमेंट में किया हुआ है उसे मुझे दूसरे में करना है, तो फाइल के थ्रू मैं करवा सकता हूँ. पर अगर मुझे वो सेम डे बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो करवाने का कोई सेंस ही नहीं हो रहा है. सेम डे पे बेनिफिट तो मिलना पड़ेगा, वरना तो आपका मार्जिन शॉर्टेज आ जाएगा. नहीं, सेम डे बेनिफिट नहीं मिल रहा है मतलब कैन यू जस्ट क्लैरिफाई फर्दर? If some shares are placed in cash segment, if I do inter segment movement from cash to मेरा कैश FO, सेगमेंट में किसी क्लाइंट ने प्लेज करके रखा हुआ है. ओके. और अभी हेलो परेश आपकी आवाज चली गई थी, वापस आ गई. सॉरी. मेरा कैश सेगमेंट में क्लाइंट का सेल्स प्लेज किया हुआ है. ही हैज गिवन मी मैंडेट फॉर ऑल द सेगमेंट्स, और अब वो डेरिवेटिव्स में काम करना चाह रहे हैं जिसमें मुझे उसको जो भी प्लेज सिक्योरिटीज है वो मुझे ट्रांसफर करवाना है. पार्ट क्वांटिटी होगा या पूरा होगा रिप्लेज सॉरी. तो वो रिप्लेज जब भी मैं ट्रांसफर करवाने भी जा रहा हूँ तो उसका बेनिफिट अगर मुझे मतलब मुझे जिस हिसाब से मैंने पहले बताया कि रिप्लेज किया हुआ है वो मुझे सेकेंड डे रिपोर्ट में मिल रहा है. तो आर यू सेइंग कि एक सेगमेंट से निकल जाता है लेकिन दूसरे में ऐड नहीं होता? हाँ, कि गलत सेगमेंट में पड़ा रहता है? नहीं, कैश में भी नहीं दिख रहा है, डेरिवेटिव्स में भी नहीं दिख रहा है, बेनिफिट सेकंड डे को मुझे मिल रहा है. That's an interesting feedback. ऐसा होना नहीं चाहिए. तो हम आपका ये केस ना we will analyze it. आप हमको कॉल कीजिए, we will clarify this to you. पर इसमें ऐसे केसेस में यदि आपसे रिक्वेस्ट है, it's an odd request, but if anything like this happens ना, कोई भी ऐसा क्लाइंट जिसका 100 शेयर जिसका ज्यादा सौदा नहीं है, वो बोलिए मैं ये करता हूँ और फिर ईमेल भेजिए मैं करने वाला हूँ, ये मैंने किया, अब आप देखिए क्या होना है. So CC also gets a feedback. कई बार CC designed the system, but the system doesn't work the way they had designed it, and then a feedback like this becomes very helpful for them. अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है अब इसको ठीक करते हैं. Maybe there's a process issue, maybe आपको क्रेडिट दे रहे हैं लेकिन दिख रहा नहीं है रिपोर्ट में. It's a very good feedback for them. सर हो सकता है. एंड मैं ये भी एग्री कर रहा हूँ कि काफी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि TM-CM का जो कंसेप्ट पहले नहीं था इतना एग्रेसिव वे में, सेगमेंट लेवल पे इंटरऑपरेबिलिटी बहुत कुछ आ चुका है. तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि उस माहौल में मतलब कि कुछ एरियाज ऐसे होंगे कि जहाँ पर मतलब प्रोसेसेस तो हो जाते होंगे बट उसका जो रिपोर्टिंग है उसमें डिले होता रहेगा, या तो फिर बग्स होंगे वो प्रॉपरली नहीं होता है. तो इसीलिए हम लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहा हूँ BBF को और आपको भी कि ये आप सेशंस रखते हो जहाँ पर हम शेयर कर पा रहे हैं.
आईसीसी को सीधा भी शेयर कर सकते हो, सुनते तो हैं, बट एनीवे और पॉइंट बताइए सर। सर एक लास्ट ही पॉइंट है अब सर, ये क्लास में भी जो रिपोर्ट्स है, काफी सारे रिपोर्ट्स फिलहाल हमें मतलब सेगमेंट वाइज मिल रहे हैं। ये भी अक्रॉस सेगमेंट्स साथ में ऑल के लिए अगर ऑप्शन हो तो अच्छा होगा, क्योंकि 3 रिपोर्ट ऐसे हैं जहां पर मुझे ऑल के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, बट बाकी सब में मुझे एक एक सेगमेंट वाइज सिलेक्ट करके लेना पड़ रहा है। तो ये भी सब रिपोर्ट्स अगर ऑल के हिसाब से हो तो हेल्पफुल होगा, विल मेक अवर लाइफ सिंप्लीफाइड, कंफर्टेबल। नोटेड परीक्षा, गुड वन। और सेम डे कैश रिलीज वाला जो है रिक्वेस्ट, तो उसमें मुझे डेरिवेटिव सेगमेंट में नियरली अबाउट 5 to 6 स्लॉट्स दिए हुए हैं, जबकि कैश सेगमेंट में सिर्फ 2 ही स्लॉट है। वो सेम डेरिवेटिव्स वाला यहाँ पर भी अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो हेल्पफुल होगा। नोटेड। नोटेड सर। सॉरी उत्तम जी, परेश भाई, अभी तक आपने शायद 10 सजेशन दिए हैं, उसमें से 8 एलोकेशन से कनेक्टेड थे, इसलिए मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता, और जो 2 नहीं कनेक्टेड थे वो भी बहुत काम के सजेशन थे, so really appreciate it, and clearly you are a person who is really ICCL systems की पूरी छानबीन करके पूरे अंदर तक टेस्ट तक जाके आए हुए हैं, so really it's a very good, a well studied and a very good quality feedback. Thank you so much, really appreciate it. Intent is simple, to comply with the regulatory norms in a right spirit and with the right processes. Thank you so much. We'll move to the next question. Thanks. Cyrus sir, your question please. Cyrus sir, you need to unmute Cyrus. Rupesh ji, your question please. Cyrus sir, yes. I'm on the road. Can you hear me? Yes, please. I just wanted to, there was a query about this late files of BRK, etc. So the provisional BRK comes and the number 5 margin file comes. With that, there is no need to wait for the final file, because there is hardly any difference between number 5 file and the last margin file. Okay. So, we don't have to wait till that file comes to process the allocation. Another question I had is that if somebody has pledged shares with us, is that good enough for allocation, or they have to be repledged? No, if somebody has pledged shares with you, you can simply allocate from your own money. You can allocate? Yes, please. Okay, fine. That's it. Okay. Other than that, so far so good. And today's notice is also very interesting, and I think makes the life a little easier for the NRI clients. Lovely. Okay, thank you. Right, sir. Rupesh ji, your question please. रुपेश पटालिया जी। हाँ जी, एक क्वेरी था कि जीसेक और टी बिल जो है ना, वो अप्रूव्ड लिस्ट में बहुत लेट आते हैं। जैसे कि टी बिल जो जुलाई में इश्यू हुए हैं, अभी तक वो आईसीसीएल के अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आ रहे। हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने की, लेकिन रिजेक्ट हो रहा है डीपी में से कि अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है उस तरह का। A feedback for ICCL. सर आपने हमको ईमेल किया है वो आईएसएन? किया है 6 आईएसएन है। इंटर सीसी बेसिस द लिक्विडिटी हम लोग वो जीसेक का लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो अगर जुलाई में या मतलब नाउ दिस इज द अगस्त, तो अगस्त में अगर बीच में कुछ इशू, इफ देयर इज एनी न्यू इश्यूज, तो इट विल गेट अपडेटेड फॉर द लिस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये पर्टिकुलर आईएसएन्स व्हिच आर सेइंग कि they were issued in July but they're not coming in August. नहीं, जुलाई ऑलरेडी 15 को इश्यू हो गए हैं, और एटलीस्ट आप लोग रिप्लाई कर देंगे कि भाई ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो भी हम लोगों को उसका लिक्विडिटी हम लोग सब देखते हैं, तो बेसिस द लिक्विडिटी, तो एटलीस्ट आप लोग द एलिजिबिलिटी इज डिफाइंड। सो या, सो वी विल चेक ऑन योर क्वेरी। क्योंकि ये जो है 90 डेज के, सिर्फ 90 डेज के, उसके ऑलरेडी 30 दिन चले गए, तो अभी वो 60 डेज ही बचे हैं। अभी वो टी बिल है अभी, तो वो even in government securities, if they're liquid, we don't put in a approved list. ऐसा कुछ है? So no, it is there. So but it's defined. I mean the tenure, and so that in. But point is, this is regarding T-bills. A suggestion on T-bills.
Any T-bill is issued today, you can add it to your list tomorrow. Why wait for a month? Yeah, It's the T-bills here. So Please, if member gives us the details on email, we would surely I add have it up. already given. I have given detail about the 6 ISNs. Out of 6, you have added 3 ISN. 3 ISN is still pending. Please provide me your email ID. Through which you have. rupees@matalia.co.in. Okay, okay, yeah. You'll get a revert today. Okay. Okay. Rishi, your question, please. सर एक रिप्लेस के लिए था, एक रिप्लेस जब करते हैं सर हम इंटर सेगमेंट में एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर लेते हैं, तो उसमें लिक्विड फंड और सर बॉन्ड है ना, वो नहीं हो रहा है सर, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। Yes, liquid funds में ये इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, म्यूचुअल ETFs की बात करें? हाँ, ETF और ये लिक्विड फंड जो भी हैं, बॉन्ड्स हैं, वो होल्डिंग स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, स्टॉक है उसके अंदर कैश सेगमेंट में, लेकिन मैं कैश को एफएनओ में मूव कर रहा हूं। Okay. Yeah, I think or meeting with you. This is the same issue which we discussed in the afternoon also, ICCL team. There are certain securities which are not allowed to move from one segment to another. Non-shares, which are ETFs, bonds, ETFs, corporate bonds, and even government securities. The same issues are. Please have a look at it. Thank you. Uttam sir, this will be available by next week. Next week it will be done. Amazing. ओके सर, उत्तम सर, आपके ये फोरम के तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ या मेरी तरफ से भी, हम लोग तो डेली कॉल करते हैं मैडम को और इनको परेशान करते हैं, लेकिन जितना फेवर कर रहे हैं ना, और जितना कर रहे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू। विजेंता मैडम और रोहना मैडम और गौरव, यानी कभी भी कॉल, जब भी हम कॉल करते हैं तो पिकअप करते हैं, कभी भी वो इरिटेट नहीं होते और आंसर करते हैं हमारा सर। Thank you, Harish bhai. Really. Okay, thank you. I'm so happy to hear this. I mean, this is super compliment for ICCL team. Moving ahead. Prakash bhai? Prakash ji, your question, please. So this was a suggestion. If replaced securities, rather than unplacing and then release it to client and then make the early payment, if there is some way it can be against the client's obligation, if it can be directly settled by way of some, if we can input some report and if it can be directly settled against the paying. So when this, I can answer this question. When the pledge replace system was designed, there was some, it's not supposed to work that way. See, अभी आपके केस में आप SCM होंगे, but कई बार SCM है, CM है, TM है, complicated है. हाँ नहीं, in case of SCM, if तो खाली SCM के लिए allow, basically release for paying, I don't think it will work. And this is not the way the system is designed, Prakash bhai. The discussion has happened on this topic, but it has to be done that. Because जो उसने pledge के लिए जो शेयर दिया वो collateral, और जो उसने माल बेचा वो settlement, वो दोनों चीज को CC अपना से भी अलग रखना चाहता. We had many discussions with even ED से भी on this, executive director से भी. बोले इन दोनों में कनेक्शन नहीं है. इनफैक्ट आपको शेयर एग्जीक्यूट भी नहीं करने चाहिए. एग्जीक्यूट किया मतलब सॉरी प्लेज इन्वोक किया मतलब कुछ झगड़ा है. रूटीन में क्यों छोड़ो और पेन में उठाओ. बट इसमें खाली एक रिस्क है कि यदि आपने यहाँ छोड़ा और उठाने गया तब तक बीच में उठ गया कोई क्या कहते हैं कोई अटैचमेंट आ गया या कुछ मूवमेंट हो गया. दैट इज द रिस्क दैट वी फेस. करेक्ट? That is also there, and sometimes there is a delay also. I mean, on a particular day on Prakash bhai, August, the release did not come till 9:15. Right? Release did not come till 9:15, and then you unpledge, then you give it to client, then you again make the early pay. I mean, there are a lot of process involved at broker and also. अर्ली पेन का एंट्री डाल के छोड़ दो, as soon as you release पट के घूम जाता है. But अर्ली पेन में होता नहीं है ना ऐसा. अर्ली पेन में नहीं, overdue नहीं जाता. overdue में नहीं जाता. Exactly. So the solution is early pay and overdue चालू होना चाहिए. Probably that solves the problem. Not but really. Then at that point of time, CC and CDSL system should also accept the early paying. No? So basically, they have to extend the early paying time as well. ठीक है प्रकाश भाई, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, बट रेगुलेटर वाज नॉट कन्विंस्ड कि मतलब दोनों चीजों को कनेक्ट करने का कोई सेंस नहीं.
but I think we can still take it forward. It is an interesting point, especially just like cash में भी तो आप, I mean, collateral से you प्रकाश भाई गलती से म्यूट पे चले गए. I am saying just like you were mentioning one day that cash collateral which we keep in the CC, that can be adjusted towards the pain, right? By a very complicated process, yes. If some file can be given to CC, that CC has the obligation, CC has the details of UCC where this repledge is done. If some file can be given to CC and against the obligation, against with settlement, broker wants to adjust this particular collateral. If some way it can be done, then I mean lot of problem can be solved, because ultimately by 7:38 we need to give the allocation and all. Otherwise, I mean, you have to take the other way. You don't allow client to sell the repledged shares. वो तो बहुत जाती हो जाएगी client के साथ. हाँ, exactly my point. So if something can be done, I mean, it is a. So we discussed the idea internally in BBF. It's called release for pain, basically. The entry would be release for pain. The release for pain डाला तो अपना pain में घूमेगा, जब भी घूमेगा, जैसे भी घूमेगा हम कुछ. Yeah. Especially for SCM. ठीक है, we'll try to move that again. Thank you. Rajesh ji, your question, please. Rajesh ji Agarwal. Yeah. Yes, sir. So the question basically is, there was some observation, like when we repledge some liquid bonds, like for example, there was a case like ICCI overnight fund is there, okay, which we have repledged for a client, and till 17th, the class system was showing the value, even the benefit was been given. On 17th EOD, there was some corporate action and the eyesight changed of that particular bond. Now today, and it is not reflecting there. ICCL again, this is again a corporate action आते ही आपका system थोड़ा हिल डुल जाता है. So that's something that you'll have to look at. In fact, even our office, I can tell you, जब भी कोई ऐसा split आता है ना, और client का position तो वो सब repledge और pledge हटा देते हैं. जब split हो गया उसको फिर से ढंग से repledge करते हैं तो बराबर ठीक से हो जाता है. But this is not a proper solution. This is a jugaad. The request to ICCL team to look at how corporate actions replaced corporate actions. Whenever there's a corporate action on securities which are replaced to CC, then there's some issue that members will be seeing. Correct, sir? Yes, sir. So now feedback. But ऐसा कभी भी case हो तो please email भेजिए CC को वापस. मैंने email किया. I've spoken to Vijita ma'am. She told me to email, send a message also, but still we are waiting for the reply. Yeah. You have WhatsApp me those details. The concerned team is already looking at it, तो हम आपको revert दे देंगे. Today only we have spoken over it. For allocation में क्या करूँ? उसको allocation के लिए fund गिनूँ कि नहीं गिनूँ मैम? ये pro में extra पैसा तो allocate कर दो ना. नहीं, but ऐसा ज्यादा allocate कर देंगे तो client के पास fund तो वो issue आएगा ना. आपने बहुत सही सवाल पूछा. आपने रिप्लेस किया हुआ है? हाँ, रिप्लेस किया हुआ है सर. लेकिन उसके बाद वो महीने के एंड में शॉर्टेज में आ जाएगा, ऐसे फाइल में आ जाएगा. ICCL you will have to answer this. What are there is no reason code for this. Uttam, in this case, let the member drop a mail to us with the details, or rather, if he has already dropped it to Vijayta, have you received a mail on this? राजेश जी, आपने मुझे WhatsApp किया था, right? हाँ, WhatsApp. एक फॉर्मल ईमेल भेज दीजिए राजेश भाई. हाँ, मैं कर देता हूँ. अच्छा, but we will handle this. We'll discuss this and we'll actually client को आज उसको unpledge करना था, वो दिख नहीं रहा था उसके अंदर. राजेश जी, हम आपको report कर देंगे. No problem. Fine, ma'am. Thanks. Thank you. ऐसे केस में क्लाइंट का कुछ और कोई माल होना तो प्लेज करा देने का, यदि है तो एटलीस्ट एलोकेशन का टेंशन नहीं, पर नहीं है तो ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व इट. नीरज जी, योर क्वेश्चन प्लीज. नीरज बटालियन. मेरे को ये एक रिक्वेस्ट करना था, आइदर ब्रोकर फोरम और ICCL, व्हाटएवर अर्ली पे इन एक्सेस होता है
we should have a system कि जो भी excess early paying हुआ है ना, by default same day reverse हो जावे. I think ICCL, please tell me if it CDSL के NSTL? CDSL. Okay, and if I believe CDSL में early paying करते हैं, we have option either to append the UCC or not. If you append the UCC, they release same day. If you don't, they release after 2 days. Is that a correct understanding? ICCL team, anybody can help me in this? What is happening? We are using power of attorney, and we are doing early paying and. power of attorney easiest के through करते हैं. हाँ. अर्ली पेन करने के दो, anyway, ठीक है सर. आपका पॉइंट ये है कि यदि किसी ने क्लाइंट ने अर्ली पेन किया और उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो प्लीज अर्ली पेन छोड़ दीजिए सेम डे. हाँ. ओके, फीडबैक नोटेड सर. Either as a broker forum we should take up and across. Sir, I will take this up. Yeah. Thank you. Thank you, Neeraj bhai. It's an important point. Thank you so much. हाय मैंने सोचा नहीं था कि आज इतने क्वेश्चंस आएंगे. सब बोलेंगे हाँ सब बराबर चल रहा है, ठीक है. बट आई रियली एंजॉय दिस. थैंक यू सो मच. यस परेश भाई. Yeah, thank you, Uttam ji. I left over one more question or suggestion, I will say. Currently, in a system for approved securities, there are few securities for which there is a market-wide limit mentioned, beyond which that securities wouldn't be accepted by the clearing corporations, or the member-wise limits are also given. So just a suggestion in that case, that at times we repledge the securities unknowingly or knowingly, but we get opportunity only if someone unpledges their security. In that scenario, my suggestion is that in case if client trades, then this security should be considered, else should not be considered for cash segment. मैं नहीं समझा. हेलो. हाँ फिर से बताइए परेश. हाँ, currently मतलब बेसिकली एग्जांपल लेते हैं. सपोज सीसी ने लिमिट लगा के 100 शेयर लूंगा. अपने 5 क्लाइंट है, 5 ने 100 दे दिए. हाँ. तो उसमें से जो पहला सौदा करे उसी के 100 कंसीडर होना चाहिए, बाकी सब अनकंसीडर में पड़े होने चाहिए. ऐसा नहीं कि 5 को अलॉट हो गया नंबर बी का, सौदा करा नंबर ए और बेचारा का कुछ नहीं हो रहा. ऐसा कुछ. हाँ, right sir. So again, question for ICCL: is the allocation of securities within the quota dynamic or is it fixed? Is it based on usage? It's based on first come first serve. Any clue how it works? Hello. हाँ जी भाई. Yeah, this is Ajay. It is on FIFO basis right now. It is not dynamic. FIFA, the way it was given. Yeah. So suppose a member has a member-wise limit of 100 shares, and five clients have placed it A, B, C, D, E. So if only it's allocated to A, B, C, D, E cannot use it, even if A has no zero position. Yeah, correct. So is it? Please consider a session to make it dynamic. Yeah, sure. All right, right. Thank you, Uttam ji. हाँ परेश भाई. Thank you. Right, I think we have run out of questions and answered almost everyone who was asked anything. And this is one of the rarest of rare MIA attended webinar जिसमें MIS की इतनी तारीफ हुई है. ICCL, I think you should have a smile over the weekend and then Monday को वापस लग जाना काम पे. Having said that, over to Lalit ji, Chairman. अच्छा, Praful bhai wanted to ask a question. We can take a couple of questions. Just बोलो Praful bhai. Yeah, hi everyone. Actually, I have one suggestion and one question. But the question is already taken regarding that ETF transfer from one segment to another segment. Yeah, suggestion is that whenever we put request for transfer of security, like मैंने अभी एक client का transfer के लिए डाल दिया है, so जब तक वो under process रहेगा तब तक मैं दूसरा request डाल नहीं सकता. So अगर if you have what I'm suggesting here कि अगर मैं एक client का डाल रहा हूँ तो the system should check कि उसी का अगर request आया तो then should not allowed. पर अगर मैं दूसरे कोई code का I'm putting another fresh request for some other security and some other client code, that has to be accepted. ICCL could have, please have a look at this if this is actually an issue. Probably, I don't think it's by design. We will check this.
Yeah, thanks, Vijit. And I really, again, Harish has already spoken to, thanks to the ICCL team, because whenever we call, either night, midnight, or anytime, and even though not the landline, we call directly on the mobile, they accept, and if that particular person is not available, he's suggesting please contact, he is available. So that's really appreciate, and thanks to the entire team. Thank you so much, guys. अच्छा लगा प्रफुल्ल भाई, appreciate your thought. तो थैंक यू एवरीवन. मैं खाली रिकॉल कर रहा था उत्तम जी की हम लोग ने ये जो सेशंस थे एलोकेशन और इस पे टॉपिक पे, आई थिंक अप्रैल से शुरू किए. अप्रैल में सेशन हुआ, मई में हुआ, जुलाई में हुआ, और 1 अगस्त से पहले इससे से 4 सेशन हो गए थे, और 1 अगस्त के बाद आज ये 5वां सेशन था. सो मैं एक्चुअली ऑब्वियसली आईसीसीएल की तो तारीफ सबने की है, पर मैं अपने मेंबर्स की भी तारीफ करना चाहूंगा कि सबने जो है इतने दिन से इतनी इसमें मेहनत की है, इतना टाइम जो बीता अनसर्टेनिटी में, एंजाइटी में, और स्लीपलेस. ललित जी आप म्यूट हो गए. ललित जी म्यूट था. तो मैं ये बता रहा था कि हमने इसके सेशन जो है अप्रैल में किए, मई में किए, जुलाई में किए, और 1 अगस्त से पहले 4-5 सेशन हो चुके थे, और आज 1 अगस्त के बाद का आज 5वां सेशन है. तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने समय समय पर अटेंड किया, और सभी ने अपने बैक ऑफिस वेंडर्स, अपनी इंटरनल टीम और अपने पूरे जोश के साथ मेहनत इस पे की. और वास्तव में जब 1 अगस्त आ गई तो पता लगा कि जो तैयारी की थी उसके मुकाबले में प्रश्न एग्जाम बहुत टफ निकला, और उसके चलते इतना जो कंटिन्यूस फीडबैक पिछले 15 दिन से आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई ये 2 वीक का, कुछ दिनों का ये जो है पेनल्टी वेवर मिले. जैसे एग्जाम में भी अगर बहुत टफ अगर एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स मिलते हैं. तो हमने अपने जो पिछले 4 प्रेजेंटेशंस थे, 4 क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को रिक्वेस्ट थ्रू दिस प्रेजेंटेशन भी वंस अगेन दिया है कि अगर ये पेनल्टी वेव हो जाएगा तो जो है उन्होंने इतनी जो मेहनत की उनको लगेगा भाई चलो कुछ तो हमें मेहनत करने का रिलीफ मिला है इतना सारा. सो ये था. एंड देन टीम आईसीसीएल तो ऑब्वियसली हमेशा सपोर्टिव रही है, और आज जो हमारे साथ जुड़े हुए रहे, रोहाना जी, विजयता जी, तृप्ति जी, गौरव जी, अजय जी एंड प्रवीण जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेल्पफुल टू अस फॉर एनी टाइम एंड एवरी टाइम. एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर ओन उत्तम जी, जिन्होंने हर वक्त सारे प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर किए, प्रिपेयर करने के बाद उनको वेटिंग कराई है एक्सपर्ट्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सपर्ट से, और वो हमेशा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी टाइम प्रेजेंट रहते हैं, पूरा टोटली इन्वॉल्व रहते हैं, और विद ए स्माइलिंग फेस ही कीप्स ऑन आंसरिंग एंड इंटरेक्टिंग एंड क्वेश्चंस को रिफ्रेश करना, ये सब करके ना वो पूरा. और आज का आप देखोगे सब लोग तो आज एकदम एक इत्मीनान से लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, और बहुत अच्छा लगा. सो विद दैट थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड वापस लग जाना काम पे अगले वीक. Uttam sir, yeah. Uttam sir, since you have given this platform, this topic is not related to allocation, but I would just request members to please keep their back office ready, considering the standardization of files also. Yes, we have already up. issued circulars, and this is a regulatory requirement. So maybe few months down the line, new files के हिसाब से पूरा processing होगा. Existing files will be discontinued. We will inform market. So I request all the members to keep their back office ready. So probably in the very near future we'll have a specific webinar only on files, to just give a member some idea if we feel that's required. That would be helpful. What happens is this Team ICCL, this webinar, once it's recorded, it becomes a database or a library. ठीक है, on YouTube. It's live. तो लोग कई बार जाके देख लेते भाई क्या डिस्कस हो रहा है, क्या बोला था. It becomes very helpful. And so anyways, thanks for pointing out this important change coming up. चलो जी ललित जी and every team ICCL and